दुम दुर्गायै नमः। ओम श्री जालपादेव्यै नमः। ओम बालरविदितिमिन्दुकिरीटं तुङ्गकुचं नयन त्रयुतं स्मेरमुखीं वरदं कुशवासा भीतिकरं प्रभजैवोऽनेशिम्। ओम ऋषिरुवाच दिव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे चन्द्रासुरावह्निपुरोगमातं कात्यायनीं तु शुभरेटलाभा विकासि भक्त्रा च विकासिताशा। देवी प्रमन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलज प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विष्णु परमेश्वरि देवी तरातरज आधारभूता जगत संवेता मयि स्वरूपेण यत स्थितासि अमं स्वरूपस्थितया त्वयेत दप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वच बीजं परमासि माया सम्भूहितं देवि समतमेत त्वं वै प्रसन्ना वै मुक्तिहेतु विद्यासमता समते वेदा त्रियसमता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वै तत् काते सुदेतव्यपरा परोक्ते सर्वभूतयदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं तुत एका वा भवन्तु परमोक्तय सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनचरिति संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाटादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विशेषो परतो शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानं शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रय गुणामये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदिनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बाचरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्रायुधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुकुटावृते महाजातिधरे नगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदा सर्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे दण्डोदितवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते नृसिंहरूपेण क्रीड अन्तं दैतन्कृतोदमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनि महाभद्रे सहस्रनयन जले वृत्रप्राणारे चन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूतिस्वरूपेण अतदैत्यमाबले घोररूपे मारावे नारायणि नमोस्तुते द्रष्टाकरालवधाने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमतने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पठितते ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती पारे भूतिभाव्रावितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसंविदे भयव्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्ववेदेभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्र मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजंसि स्वनेन पुर्या जग सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरा श्रीघोषा पङ्क चर्चित करोज्ज्वल शुभाय खड्ग भवतु चण्डिके त्वं नता वयं रोगान् शेषानमांसि दुष्टा रुष्टा तु कामन् सकलान् वीटन् त्वमाश्रितानं न विपन्नराडं त्वमाश्रिता याश्रयतं प्रयान्ति एतकृतं कथनं त्वया धर्मदिशं देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वा विकेत प्रकरोति कन्या
विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे श्रद्धेषु वाक्येषु जकातनन् मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयते तदतीव विश्वम् रक्ष्यांसि यत्रोग्रविषाजनाग यत्रारयो दस्युबलानि यत्र धावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभाषि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिभाषि विश्वम् विश्वात्मिका धारयचेति विश्वम् विश्वेशमन्द्य भवति भवन्ति विश्वात्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी व्रजेद परिपालय नो नित्यं यदा सुरपदा तदुनैव सद्य पापानि सर्वजगतं प्रथमं न यासु उत्पादपाकजनिता च महोपसर्गान् प्रणतानं प्रचेद त्वं देवी विश्वार्थिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीडे लोकानं वरदा भव देव्योवाच वरदां सुरगणा वरं यन्मनसे सदा सम्प्रणुतं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवा ऊचु सर्वबाधप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मद्वैधिविनाशनं देव्योवाच वैवसतेन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भचैवान्या भूत्वा सेते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा तततो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य अनिष्यामि वैप्रचित्तं सुदानवान् भक्ष्यन्त्याशतानुग्रान् वैप्रचित्तन्मासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा तत्तो मां देवता स्वर्गे मर्तलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकम् भूय च सदवार्चिक्या मनावेटमनं भजे मुनिभिः संस्तुता मुमौ सम्भविष्याम्य योनिजा ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षयिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजा सताक्षेमिति मां तदा ततोऽहमखिलं लोकमत्मदेहसमुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकै राविटे प्राणधारकै शाकम्भरी दिविख्यातिं तदा यास्यामं भुवि तत्रैव तपदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनः चां यदा भीमां रूपं कृत हिमाचले रक्ष्यांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे तोषन्त नम्रमूर्तय भीमदेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाख्यत्रैलोके महाबाधं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्येयषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति च मां लोकाः तदा तोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानबुद्धः भविष्यति तदा तदवतीर्याहं करिष्याम्यहरिसंक्षयम् ओम शक्ति मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या स्तुतिर्नामैकादश। ओम श्री जालपा देव्यै नमः।